Okay, so now we are going to start a mock interview for our student Vivek Kumar, and this mock is for BPSC, lecturer electrical. So आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से किया आपने अपनी एजुकेशन? सर मैंने बीटेक भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर से किया। उसके बाद फिर मैं सर गेस्ट फैकल्टी राजकीय पॉलिटेक्निक धनबाद में सर करेंटली पढ़ा रहा हूँ सर। ओके, तो कब किया आपने बीटेक और कब से पढ़ा रहे हैं? सर मैंने 2019 में कंप्लीट किया एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीटेक आई विल ज्वाइन पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो आपने कोई बड़ी हायर एजुकेशन के लिए कोई डिग्री में एनरोल किया, एमटेक पीएचडी कुछ? नहीं सर, एमटेक मैंने नहीं किया सर। तो एमटेक नहीं करना फ्यूचर में आगे? सर फ्यूचर में अगर वैसा टाइम मिलता है सर, अगर मौका मिलता है तो जरूर करेंगे, लेकिन पहले सर हम मतलब जॉब स्टेबिलिटी सर पाना चाहते हैं सर। तो जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है? सर गवर्नमेंट कॉलेज है। कितने बच्चे हैं लगभग? सर वहाँ पे एक ब्रांच में 60 स्टूडेंट है सर। अच्छा, आपकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 60 हैं? यस सर। ओके, तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? सर इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाते हैं। एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हो? यस सर। कितने घंटे की टीचिंग होती है पूरे दिन में? सर 2 पीरियड और 1 पीरियड 50 मिनट, मतलब टोटल 100 मिनट्स का सर। और बाकी टाइम में क्या करते हो? सर बाकी टाइम पे उसके बाद फिर हम लोग का छुट्टी हो जाता है सर, बस क्लास के टाइम पे जाना पड़ता है। तो बड़ी अच्छी नौकरी है आपकी, तो फिर इसको चेंज क्यों करना चाहते हो? सर चेंज इसलिए करना चाहते हैं सर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर पेमेंट कम है और फिर से कब जॉब से निकाल देंगे ये भी नहीं पता है। हाँ ठीक है। अच्छा, गेस्ट के लिए जाते हो ना, गेस्ट लेक्चर के लिए? यस सर। तो पेमेंट मंथली मिलता है या फिर पर लेक्चर के हिसाब से मिलता है? सर पर क्लास के हिसाब से मिलता है सर। ओके, और मंथली मिलता रहता है या डिले भी हो जाता है? नहीं सर, टाइम से मिल ही जाता है, लेकिन 2-3 महीना हो ही जाता है। ओके, तो कोई और सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं किया आपने मशीन के अलावा? सर वैसे तो सर मैं जानता हूँ सर, नेटवर्क भी मैं जानता हूँ, पावर सिस्टम कंट्रोल सिस्टम भी सर जानता हूँ, बट वहाँ पे और भी फैकल्टीज हैं, जैसे कोई पीरियड अगर खाली रहता है तो सर नेटवर्क वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स के बारे में कुछ जानते हो? यस सर, करंट कंट्रोल करंट सोर्स ये एक तरह का सोर्स है जिसमें मतलब हम लोग करंट मतलब उसको कंट्रोल करते हैं सर, करंट को कंट्रोल करते हैं। करंट को कंट्रोल करते हैं, तो वो तो हम यस वीसीसीएस में भी करते हैं। यस सर, बट ये थोड़ा सिंपल होता है सर। मतलब वीसीसीएस और सीसीसीएस दोनों में क्या डिफरेंस है? सर यू आर टॉकिंग वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स सर। हाँ, अच्छा सर, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स में सर मतलब इंटरनल सर वोल्टेज कंट्रोल करंट होता है, और एक्सटर्नल सर हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स में किसको कंट्रोल करते हैं? वोल्टेज को? सर हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं सर, लिखो और अपनी उसके थ्रू कॉपी में, लिखो अपनी कॉपी में ये लाइन लिखो कि वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स में हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। ये आपने बोला ना, किसकी हेल्प से करते हैं? सर यहाँ पे करंट सोर्स होता है और हम लोग यहाँ पे वोल्टेज को सर कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज को करंट की हेल्प से? यस सर। सर यहाँ पे करंट सोर्स होता है और वोल्टेज की हेल्प से हम लोग कंट्रोल करते हैं। इस तरह से सर डायग्राम बनता है इसका। अच्छा, कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे सीसीसीएस का, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। करंट कंट्रोल करंट सोर्स का कोई एग्जाम्पल दो। सर इसका एग्जांपल अभी याद नहीं आ रहा सर। ओके, अच्छा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हो? यस सर। क्या काम करता है?
सर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से सर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से? सर इसमें हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन पता रहता है, उसके हेल्प से सर हम लोग फिर टाइम डोमेन में निकालते हैं सर रिस्पॉन्स। तो एक फंक्शन लिखो s+3 s+3 डिवाइडेड बाई यस सर s स्क्वायर s+1 s² + 1 2s+1 सर प्लीज रिपीट सर, आवाज क्लियर नहीं है s लास्ट। स्क्वायर + 2s+1। ठीक है सर। तो इसका इनवर्स लाप्लास निकाल के दिखाओ। सर ये इसके फर्दर सिंपलीफाई होगा सर, अभी मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म से प्रैक्टिस में नहीं है, इससे याद नहीं है। ओके, अच्छा, एक फर्स्ट ऑर्डर लो पास ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर का? यस सर। k डिवाइडेड बाई 1 + τs फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन हो गया। क्या होगा, फिर से बोलो। k डिवाइडेड बाई 1 + τs 1 + τs। यस सर। ओके, तो अगर इसमें उसको कांस्टेंट में सर लिखें तो इसको हम कट ऑफ ऐसे भी लिख सकते फ्रीक्वेंसी हैं क्या 1। होगी? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सर इसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओके, चंद्रा सर। सर विवेक कुमार, गुड इवनिंग सर, सॉरी गुड आफ्टरनून सर। good afternoon, Vivek. So you are what are your favorite subjects? सर इलेक्ट्रिकल मशीन एंड कंट्रोल सिस्टम, सॉरी Okay. नेटवर्क एनालिसिस सर। Okay, electrical machines and machine network है। analysis. यस Okay, let's start with the electrical machines. Okay, yeah, fine. See, there is a transformer. यस सर। It is now operating under rated voltage and rated frequency. ओके सर। Now, keeping voltage constant, rated, I'm decreasing the frequency. What is the effect of this decrement in frequency on this core losses? सर अगर यहाँ पे वोल्टेज को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी को अगर हम डिक्रीज करते हैं
तो यहाँ पे सर आयरन लॉस जो है वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा सर। Why? सर बिकॉज यहाँ पे आयरन लॉस में जो हिस्टेरिसिस लॉस का जो फॉर्मूला होता है सर, वो उसमें वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर फ्रीक्वेंसी होता है। Loss is inversely proportional to frequency. Okay. यस सर, इसलिए सर फ्रीक्वेंसी अगर कम होगा तो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस बढ़ जाएगा और आयरन लॉस सर बढ़ जाएगा। Can you draw the electrical equivalent circuit of a transformer? इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, यस सर। सर बोर्ड पे बनाए या कॉपी पे? Copy पे बनाओ। यस सर। सर ऑन लोड ना सर? On load. Take some load. ओके सर। सर Okay. So you kept that shunt branch, right? यस सर। What is that shunt branch? What it represents? सर शंट ब्रांच रिप्रेजेंट सर iron loss and leakage reactance loss. The losses due to sir iron loss and leakage. Because of leakage, loss will take place. Yes sir. And You explain how? reactance comes. सर जब लीकेज होगा तो वहां पे सर लीकेज रिएक्टेंस आएगा सर, और उसकी वजह से सर यहाँ पे लॉसेस देखने को मिलेंगी। और ये जो आरसी जो हमने शंट ब्रांच में सर लिखा है, ये कोर लॉस को सर रिप्रेजेंट कर रहा है शंट ब्रांच में। So you are saying leakage reactance loss, right? Yes sir. Because of reactance, does power loss will take place due to reactance? Is it possible Yes, for sir. power loss to take place? Yes sir. If power loss is taking place, to represent that power loss, which element is used in electrical engineering? It is resistance or inductance? Sir, resistance. Then what? You are putting some reactance also in shunt, right? In parallel with resistance. What is that reactance? सर रिएक्टेंस की वजह से सर यहाँ पे वोल्टेज में ड्रॉप देखने को मिलेगा, और फिर वोल्टेज में सर ड्रॉप होगा तो अल्टीमेटली सर पावर में भी लॉस होगा सर। हमें जो आउटपुट वोल्टेज सर जो सेकेंडरी साइड मिलेगा उसमें सर डिक्रीमेंट आएगा। So is it power loss or power transfer capability is decreased? Loss means that has to be converted from one form to another form, right? Yes sir. See, first of all, you are keeping that one in shunt. That RC and XC you are putting in parallel, you are keeping in shunt. Why you are keeping those two in shunt? Why not in series? सर बिकॉज यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो कम होता है सर, इसकी वजह से सर यहाँ पे जैसे वाइंडिंग जो यहाँ पे वाइंडिंग रेसिस्टेंस जो हमने यूज किया सीरीज में, उसकी वजह से सर जो कॉपर लॉस होता है वो ज्यादा होता है और आयरन लॉस जो होता है सर वो कम होता है। इसलिए हम इसको शंट में रखे हैं ताकि यहाँ पे करंट कम यहाँ पे आ रहा है, आई नॉट सर, नो नोट करंट। So you mean to say, okay, you mean to say that if more current is flowing, that's why I am not putting in series, so that loss will be shown as high. So as the loss is less, you are putting in shunt, right? Yes sir, loss कम होता है इसलिए यहाँ पे इसको शंट में लिए हैं सर। You see, why to put in shunt? You can put in parallel with that some element, okay, with high resistance. If resistance is high, then current flowing is less. You can put in parallel with that winding resistance, na? More Yes, resistance, RC. Why you are putting in shunt only? And that too, you are putting after that R and X.
Why you are not putting this shunt branch just after that input voltage in the equivalent? सर वो हम लोग इनपुट वोल्टेज से पहले भी सर कर सकते हैं. Okay, then why वो you draw like this? अप्रोक्सीमेशन सर वो अप्रोक्सीमेट ये एग्जैक्ट मॉडल हो गया सर. और वो अगर हम शंट ब्रांच को पहले कर देंगे सीरीज ब्रांच से तो वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इक्विवेलेंट सर्किट उसको Okay, बोलते हैं. fine. See, what is the approximation? Why it is called as approximation? If I keep this shunt branch just after the voltage. Yes, sir. Sir, because the no load current is about 2 to 5% of the rated current. इसलिए सर यहाँ पे जो लॉसेस जो होती है नो लोड लॉस वो कम होता है, इसलिए हम इसको शंट ब्रांच में लेते हैं सर. See, you are saying that no load current is 2 to 5%. That's why we Yes, are sir. taking in shunt. Yes, See, sir. during no load, in fact, the series current, the current which is flowing in the series also same, na? Yes, sir. That is one thing. Another is you are putting shunt branch after this resistance and reactance, and you are calling it as an exact model. Yes, sir. I asked why you are keeping there only. Why not just after input voltage? You are saying that it is an approximation, first approximation. What is the approximation? Why you are taking that approximation? सर यहाँ पे इनपुट वोल्टेज के पास में अगर हम इसको कनेक्ट करें सर तो इनपुट वोल्टेज की वजह से क्योंकि हमारा इनपुट वोल्टेज सर वो हाई है और हाई वोल्टेज की वजह से सर यहाँ पे लॉसेज बढ़ जाएगा अगर हम इसको मतलब सीरीज ब्रांच से पहले कनेक्ट करते हैं तो इसलिए हम इसको एग्जैक्ट मॉडल में सीरीज ब्रांच के बाद कनेक्ट करते हैं. My question is, how do you know that after that a series resistance and reactance only you have to connect that is exact model? How do you know that? सॉरी सर इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन याद नहीं है सर. Okay, fine. And one more thing. See, you kept one more reactance after this shunt branch. आफ्टर शंट ब्रांच मैंने रिएक्टेंस नहीं लिया था. You kept one reactance, right? आपने लगाया है एक reactance shunt branch के बाद. वो reactance क्या represent करता है? What it represents? सर यहाँ पे सेकेंडरी साइड में सर यहाँ पे लिखे हैं सर. See, that E1 you are showing na E1. Yes sir, E1 is the induced voltage sir. वहां पे आप reactance का inductance का symbol दिखाया ना? Yes sir. We are putting it as E1, but you are showing it as coil inductance. Why it is? Sorry sir, इसका याद नहीं है सर. Okay. So after that, you drawn some two straight lines between that E1 and E2, two straight lines, right? Yes sir. Why you drawn those lines? Sorry sir, इसका भी reason याद नहीं. Suppose if I am not drawing those two lines, my circuit is wrong. Yes sir. हाँ सर, जनरली तो अभी जितना फिगर देखे सब में लाइन ड्रॉ होता है. Okay. Fine. See, can you draw per unit equivalent circuit of transformer in per unit, not in exact, not in absolute model? In per unit model, can you draw? Sir, exact या approximation? Exact you draw. See, approximation only neglect that shunt branch. Shunt branch you can neglect. That is only approximation. सारे ब्रांच को प्राइमरी साइड ले लें या सेकेंडरी साइड? That is your wish. I am asking you to put in per unit. Okay sir. Vivek,
Make it fast. Sir, this one, sir. Okay. Fine. Okay. So in per unit, Z01 is equal to Z02, right? Means either Yes. you refer primary to secondary or secondary to primary, both impedances are equal. Z01 per unit and Yes. Z02 per unit both are same, right? Equal. Yes, yes. Then if you refer to primary or secondary, what is the problem you have? सर इसको हम लोग सर प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर किया है, ये जो मैंने सर ड्रॉ किया. Either you refer from primary to secondary or secondary to primary, Z01 per unit and Z02 per unit both are same, na? Then what is the Yes, sir. What is the problem if it is referred from primary to secondary or secondary to primary? Both are same, right? In per unit. Yes, sir. Can you prove that Z01 per unit is equal to Z02 per unit? Yes, sir. Done, Vivek? सर यहाँ पे Z01 पर यूनिट में Z1 प्लस Z2 डैश आ जाएगा और Z2 पर यूनिट में Z1 डैश प्लस Z2 आ जाएगा. So both should be equal, right? Okay, let me give you Yes, feedback, sir. Vivek. Let me give you feedback. See, it's very important to know each and every part of any circuit of an electrical machine. Okay, you are going for a lecturer job. Suppose if the same questions were asked to you by a student, so you must be in a position to answer them, right? So in a very clear manner, what is this element, why I'm keeping the here, what is this circuit and how is this circuit, why this circuit only, why not in some other form? So for all these things, one must have clarity, right? Yes, sir. So prepare very well, okay? Okay, sir. Over to Tyagi, sir. हेलो. Yes, sir. तो विवेक भाई 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों में लड़खड़ा रहे हो. सब्जेक्ट मशीन के अलावा 1-2 और पढ़ने पड़ेंगे वहां पे, ठीक है? Yes, sir. हाँ, जैसे एनालॉग में तुम्हें CCS, BCCS ये सब एक बार देख लो. सर सिग्नल सिस्टम उतने अच्छे से सर पढ़े नहीं है. अरे सिग्नल सिस्टम नहीं है, एनालॉग है ये. Yes, sir. और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो जरूरी है, कंट्रोल में भी काम आता है, नेटवर्क में भी काम आता है, ठीक है, और सिग्नल हर जगह काम आता है. तो थोड़ा रिवाइज करो Okay. अच्छी तरीके से. हाँ, Okay, sir. सब्जेक्ट बढ़ाओ अपने 2-3 ना. Yes, sir. हाँ, चलो ठीक है.